Hey, good evening, namaskar, namaste. ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन, सतारा हिल हाफ मैराथन एंड फिट पेज की तरफ से आप लोग सब लोग को नमस्कार। मैं राजेश गोपीनाथ और मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाला हूं। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट्स हैं और ये प्रोग्राम बेसिकली इनका जो थॉट प्रोसेस था इज फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर संदीप सूर्यकांत काटे, जो सतारा हिल हाफ मैराथन के फाउंडर हैं। और इसके बारे में आप जानते हो कि ये गिनेस बुक रिकॉर्ड में आया है फॉर द highest number of participation in a hill half marathon. And it started 10 editions, 10 years back. When it started, we had few people coming in. I think Kalidas Hiruve was the winner of the first hill half marathon of Satara. And now currently, 11th edition is just, I think, started. And all the registrations for this has been completed. It's going to be held on 18th September 2022. It started few days back. Couple of the first few hours was for runners in Satara, and after that it was open for all. And the great thing is that it has been completed within few hours. I think the demand is more than the supply, so that is the reason why it has been completed so fast. So if you want to know more about the Satara Hill Half Marathon, you can actually go on to the page where Dr. Sandeep Suryakant Kate and Vikas Singh from Fitpage. There is a podcast where he was interviewed by Vikas Singh, and he talks a lot about Satara Hill Half Marathon. Agar registration nahi hua hai, so it doesn't matter, because this talk is all about helping everyone, and most importantly to help you. Agar is baar nahi hua, no problems, agle baar karenge. तो अगले साल के लिए आप तैयार हो जाइए प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग इस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जहां पे नॉट ओनली रनिंग बट इट्स ऑल अबाउट फिटनेस ऑल्सो। और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा जो पहला गेस्ट है वो आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ही इज डॉक्टर संदीप सूर्यकांत काटे, हु इज द फाउंडर and he thought about getting this marathon organized. Most importantly, he also did a lot of homework, a lot of research, went to South Africa to get Mr. Norrie Williamson as the first race director, and also for measuring the course. And he is also the author. I think last year, it's been 1 year. He's also the author of the first book on on marathon training in Marathi, which has been a fantastic read. And I would say it's written in very easy language. Even I could understand it and I could read it, even though I'm not well versed in it. I studied Marathi till 8th standard only, but I could read it and enjoy it because it's in a very nice language, not very Shuddha Marathi, but it's a mix of English, Marathi, and a lot of other things. We have got second guest. The second guest is Dr. Pallavi Pisal. She is the race director for Satara Hill Half Marathon, and she is practicing medical professional, a nutritionist, former basketball player. First marathon, she won a podium finish. I think, and she is also part of the race director. I think Dr. Sandeep and Dr. Pallavi can be clearly identified with their wings, the Satara, the logo. Yes, I think see the chest going out fried. Nice. Our third guest, I think this year Satara Hill Half Marathon has also tied up with Fitpage. And we have got a wonderful personality, a great knowledgeable person, Mr. Vikas Singh, and he is a runner. He is a motivator. He has got a page. I think all of you should go and check his page also. And he has got a lot of wonderful runners, world-class runners in his page, who writes columns and gives a lot of ideas about running and fitness. So let us start with the first question. The first question is for Dr. Sandeep Kate. Fitness Zindabaad. Hey, theme se badal tumi, you can just talk about it. Why this theme and what is this all about? So thank you, Rajesh, for that wonderful introduction. And you've done your duty as a host because you're in that position today. But let me take this opportunity before I get into the topic. Fitness Zindabaad के बारे में बात करने से पहले, let me in short tell the audience who Rajesh Gopinath is and what All India Runners Motivation is all about, right? I'm sure जो देख रहे हैं मुझसे काफी लोगों को पता है। राजेश पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा काम, राजेश सर राइट, 2 years, right?
यस। तो 2 साल से ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन नाम का जो चैनल चला रहे हैं राजेश, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। जो हमारी जो फ्रेटर्निटी है रनर्स की, उसको थोड़ा सा ना निग्लेक्टेड काइंड ऑफ होता है ना, द मेन स्ट्रीम में क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी एंड सो मेनी अदर स्पोर्ट्स आर देयर, बट रनर्स की हमारी छोटी सी कम्युनिटी जो है, उसके जो हीरोज हैं, मोस्टली अनसंग हीरोज है ना, जो शिवनाथ सिंह हो या मिल्खा सिंह को सब जानते हैं, बट थोड़ा सा लेस लाइमलाइट में जो रनर्स है, उन सबको इंटरव्यू करके उनकी इन्फॉर्मेशन रनर्स तक पहुंचाने के लिए, एंड टू ब्रिंग द एंटायर रनिंग कम्युनिटी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टुगेदर, I think Rajesh Gopinath is doing a wonderful job with All India Runners Motivation, and I thank him at the outset for being the host today and going forward also from here. जब हम लोग 16 हफ्ते का ट्रेनिंग करेंगे यहाँ से आगे सातारा हिल हाफ मैराथन तक के, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग यूजुअली एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में ये सेशन करेंगे, एंड राजेश हैज वेरी काइंडली एंड ग्रेशियसली agreed to host all these events. So thank you Rajesh, and coming back to your question now, so why fitness Zindabad, you know. सो एक उसकी स्टोरी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। क्या हुआ कि रनर्स जो होते हैं, जैसे मैं, हम लोग रनर्स जब रनिंग करते हैं तो रनिंग ही करते रहते हैं और कुछ ज्यादा सोचते नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। वी आर लाइक क्रेजी अबाउट, वंस वी गेट इनटू इट वी आर सो। 2020 की जब बात है ये, कि जब आई वाज फुल्ली इनटू रनिंग, एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट इट एंड ऑल। कॉमरेड्स मैराथन मैंने जस्ट रिसेंटली 2019 में किया था, तीसरी बार, द अल्ट्रा मैराथन एज यू नो। और उसमें मैंने 10 घंटे में किया था। मेरा बहुत लंबा सपना था कि मैं 10 घंटे के अंदर करूं। उसके बाद फुल मैराथन मुझे 3.5 घंटे के अंदर करना था। वो मेरा सपना फरवरी 2020 में पूरा हो गया। दिल्ली में मैंने किया फाइनली 329, आई ब्रोक दैट बैरियर, एंड देन आई वाज लाइक पम्प्ड अप कि अभी मैं कॉमरेड्स चौथी बार 2020 में करूंगा, एंड आई विल डू द सब 9, यू नो, बिल रावण एंड ऑल। एंड सडनली मार्च अप्रैल आई थिंक, when I came back to Delhi, COVID happened, as we all know. अब वो कोविड पैंडेमिक की वजह से सडनली इट वाज अ फुल स्टॉप टू रनिंग काइंड ऑफ। तो वो पूरा साल तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में चला गया। हम लोग अपनी इवेंट भी उस साल की नहीं कर पाए, तो वी डिड अ वर्चुअल इवेंट, वी डिड अ स्टे होम एंड हेल्दी मैराथन, सो SHHM रादर देन सातारा हिल हाफ मैराथन। उस साल हमने स्टे होम एंड हेल्दी मैराथन किया, जिसमें टेरेस पे भागना, घर में भागना, ट्रेडमिल में भागना, ये सब हमने सीखा। उसकी वजह से द रनिंग वाज देयर, बट इट वाज नॉट रियली ऑन ग्राउंड ना। पर उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव आया। हमको ये पता चला कि हम लोग घर पे भी रह के कुछ कर सकते हैं। तो फिटनेस के लिए जरूरी नहीं कि बाहर ही जाए, रन ही करें, रोड पे भागे। तो व्हाइल दिस वाज गोइंग ऑन ना, टाइम बहुत मिला, घर पे थे तो फ्री टाइम मिला। तो फॉर्चुनेटली, थैंकफुली, उस पीरियड में मेरा बुक लिख के कंप्लीट हो गया, जो बहुत सालों से मेरी इच्छा थी। आई बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग द बुक, एंड फाइनली आई वाज एबल टू come out with my book, which is more marathon sa. I don't know if you can show the picture here, but most of you have seen it. If you're not, then definitely you should check it out. मराठी मध्ये लिहिलेलं जगातलं मॅरेथॉन या विषयावरचं पहिलंच पुस्तक आहे हे, आणि खूप चांगले रिव्ह्यूज आहेत। साध्या सोप्या भाषेत आम्हाला जे सांगायचं होतं मॅरेथॉन रनिंग बद्दलचं, ते मी त्यात उतरवू शकलो, आणि ते दॅट हॅपन्ड इन 2020. सो दॅट वाज वन गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ द कोविड पैंडेमिक। बट एंड देन अगेन वी थॉट अभी खत्म हो जाएगा, 21 में सब नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा नॉर्मल हो गया, अगेन देयर वाज लॉकडाउन। आई सेड बैक टू स्क्वायर वन, अभी क्या करना है। फिर से रनिंग, थोड़ा जो जस्ट शुरू किया बाहर जाके भागना, फिर से बंद हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये फिर से सवाल आ गया। तो मेरे को याद आया कि मतलब जैसे ना, जब कॉलेज में था मैं, अभी तो मैंने रनिंग 10 साल से शुरू किया टू लूज वेट एंड ऑल, बट जब मैं कॉलेज में था तो मैं बॉडी बिल्डिंग, आई वाज काइंड ऑफ इनटू द जिम थिंग, यू नो, जिसको अभी हम लोग रनर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। वी गिव अ फैंसी नेम एंड ऑल, बट तभी हम लोग जिम जाते थे, बस इतना ही मालूम था, भागते नहीं थे। पर अभी घर पे बैठे बैठे मेरे को डंबल पड़े दिखे, मैं सोचा यार रनिंग तो अभी नहीं कर सकते, तो चलो जिम करते। तो अगेन आई वेंट बैक टू, यू माइट से, माय फर्स्ट लव। और मैंने घर में थोड़ा वर्कआउट भी शुरू किया, अपार्ट फ्रॉम द घर में हॉल में चलना, जॉग करना। एंड देन इट वाज लाइक अ लव, यू नो, फाउंड अगेन, लॉस्ट एंड फाउंड अगेन। तो अच्छा रहा वो, दैट वाज अ गुड जर्नी। आई मैनेज टू, यू नो, तभी 17% मेरा बॉडी फैट था, नॉट वेरी हाई बाय यूजुअल स्टैंडर्ड्स, बट मुझे लगा चलो यार कुछ अच्छा अलग करते। सो आई केम अक्रॉस some YouTube videos. I read about fat loss and body recomposition, and I was able to do something interesting for after a long time. So that is what came out of that thing. So मेरे को ऐसा लगा कि यार ये knowledge जो मेरे को मिला ना, I was able to cut down my body fat from 17% to about 9% odd. तो मैंने सोचा यार ये बहुत अच्छा है ना। रनर्स ये सब नहीं सोचते हैं, बॉडी रिकम्पोजिशन, थोड़ा सा वेट भी कंट्रोल करो, फिटनेस इंप्रूव करो, अदर थिंग्स अदर देन जस्ट रनिंग। स्लीप का इंपॉर्टेंस मुझे पता चला, प्रोटीन खाना कितना जरूरी है, ये सारी चीजें जो एज अ रनर आई रियली यूज्ड टू निग्लेक्ट, आई हैव टू कन्फेस। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें बताना चाहिए लोगों को, और उसके लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करते चलो।
पर राजेश, जैसे आपको मालूम है इतना आसान नहीं है कोई शुरू करना, लेकिन उसको मेंटेन करना आप 2 साल से कर रहे हैं. आई हैट्स ऑफ टू यू. वीडियोस बनाना, शेयर करना. आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक इवन वन वीडियो. तो फाइनली वो तो हुआ नहीं. अच्छा, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, ये प्लानिंग 6 महीने से दिमाग में था. मेरे को लोगों को बताना है, लोग पूछते रहते थे, सर आपने 6 पैक्स कर दिया, कैसे किया वगैरह. तो चलो यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, प्लान तो किया. नाम के लिए मैंने 3 महीना लगाया सोचने के लिए. एंड फाइनली एक मेरी डॉटर से डिनर पे बात करते करते ना, समहाउ फिटनेस फिटनेस वर्ड तो था ही दिमाग में. एंड समथिंग हैपेंड, आई सेड फिटनेस जिंदाबाद. सडनली आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट दिस थिंग केम आउट. सो आई सेड फिटनेस जिंदाबाद इज अ नाइस नेम फॉर माय यूट्यूब चैनल. चैनल तो नहीं बना, बट जब फाइनली इट केम टू 2022, फिटनेस जिंदाबाद दिमाग में घूम रहा था. एंड देन पल्लवी एंड माय टीम व्हेन वी सैट डाउन कि इस साल का थीम क्या करना है, बिकॉज फाइनली थैंकफुली 2021 इज नाउ ओवर. वी हैड अ स्मॉल एडिशन इन 2021, 1000 लोग सिर्फ आए थे, बट वी कुड ऑर्गेनाइज आवर 10th एडिशन ऑन द ग्राउंड. और अभी जब 11th कर रहे हैं हम 2022 में, तो थीम क्या करना है, तो आई सेड चलो यार ये फिटनेस जिंदाबाद ही थीम रहेगा. एंड वील टॉक अबाउट all the other things apart from running that runners should be really doing, and that is how it happened. And here we are with Fitness Zindabad as a theme for SHSM 2022. So that's the story. वेरी गुड. बहुत ही इंस्पायरिंग है आपका स्टोरी, स्पेशली बिकॉज आपके जो ओल्ड पिक्चर्स देखते हैं, वन विच वेरी टचिंग द कोन ऑफ द ताजमहल, वो एक पिक्चर है. वहां पे काफी तंदुरुस्त थे तभी आप. लेकिन अब जो है आपके एकदम डोले शोले है एंड 6 पैक है. एंड आप जो है ट्रेनिंग करते हो, लॉट ऑफ पिक्चर्स. आई एम श्योर कि अपार्ट फ्रॉम द बुक इससे भी बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, which is fantastic. I must say, I think told at the introduction also कि आपका जो बुक है वो मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज मैं मराठी, जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ 4 साल ही सीखा हूँ, 8वीं तक, 4th to 8th. और उसमें था कि ना आई कुड इवन अंडरस्टैंड एंड रीड इट, एंड दैट आई फेल्ट वेरी नाइस कि बहुत सालों के बाद आई स्टार्ट आफ्टर 24 odd years or maybe 34 odd years I have read मराठी बुक एंड आई कुड फिनिश इट. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड अ लॉट ऑफ गुड टिप्स, नॉट ओनली अबाउट रनिंग ट्रेनिंग बट ऑल्सो अबाउट रेस डायरेक्शन, जो जैसे आपने शुरू किया. सो इट्स फैंटास्टिक एंड इट्स ऑल्सो नाइस टू दैट यू स्टार्टेड दिस सेशन एंड योर थॉट प्रोसेस इज फैंटास्टिक, बिकॉज रनिंग ही सब कुछ नहीं है, और बहुत कुछ है फिटनेस के लिए. So I just wanted to ask Vikas out here, our guest, who has come. I just wanted to check up. You are actually the technology partner this year. You are actually with Satara Hill Half Marathon. Tell us about this partnership and tell us how it all came about. Sure. Thank you. Before that, I think मुझे पहली बार ये अच्छा भी लगा कि डॉक्टर संदीप काटे एटलीस्ट एक चीज है जो कि नहीं कर सकते हैं. जो उन्होंने बताया कि YouTube उन्होंने चैनल शुरू किया लेकिन एक भी वीडियो नहीं डाला. नहीं तो मुझे लगता था he is a superman, right? Almost everything he could do, from doing a sub 330 marathon to comrades to his 6 packs and writing a book, being a doctor, organizing a race of this stature. So it's heartening to know there is something that he can't do, and that he is only human. So from there, so डॉक्टर काटे और मैं मिले थे 2019 में, जो मेरा सेकेंड ईयर था बजाज एलियंस पुणे हाफ मैराथन का. वहाँ पे हम लोग मिले और हमने बात करना शुरू किया इनकी रेस के बारे में, अपने रेस के बारे में. और उसके बाद डॉक्टर काटे वाज आल्सो एसोसिएटेड विद माय रेस, जहाँ पे ही वाज सर्विंग द रोल ऑफ अ मेंटर, एंड ही रियली हेल्प्ड मी टू टॉक अबाउट कि रेस को ना कि ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, बट मोर लाइक कि आप कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हो. एंड आई सॉ हिज पैशन दैट ही वाज लाइक टायरलेसली ही वाज डूइंग. एंड देन आई हैड आल्सो सीन एज अ रनर how he was creating this community that was crazy about running in Satara Half Marathon, right? और मुझे ये लगा कि someone who started from having less than 1,000 runners and reached where he reached, I thought, because we are building something for runners, I thought a great start point will be doing something with Dr. Kate. और इसकी वजह से Dr. Kate और मैंने हमने फोन पे बात किया और मैंने कहा कि I think what you are trying to do and what we are trying to do, we are trying to solve the same problem. That is कि provide not only an avenue to runners, but let them systematically challenge कि वो क्या करना चाहते हैं to achieve their fitness. And we thought if through our content platform, more than technology platform, because हम अपने content platform के through
with the help of researchers. We bring science to the remit of fitness. तो मैंने सोचा कि अगर हम इसको लार्ज स्केल पे डिसेमिनेट कर सकते हैं with the help of Satara Hill half marathon, I thought that will be a great start. So हमने बात करना शुरू किया. And then I also saw, because similar to Dr. Kate, I like challenges. मैंने कहा अगर हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो what better than launching with SHHM, which is possibly it has the maximum demand in the first hour itself when the race is launched. तो हमने कहा अगर हमें ये देखना है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है और कितना स्ट्रेस ले सकती है, इन्हीं के साथ में शुरू करते हैं. So I took it as a challenge and I was like, let's do it. And I spoke to him and it was a call, very happily ended. And he said, ठीक है, चलो करते हैं. And then everything was on WhatsApp as we concluded. And here we are. So we came together to help the race and to help the community of runners to become a better version of themselves with the help of technology, with the help of science, with the help of training. And that's how we started, right, Dr. Kate? Yes, absolutely. It was nice to team up with a comrade in arms, somebody who is also an accomplished runner like you. अच्छा, मी सगळ्यांना सांगतो इथे विकास हा he is an entrepreneur and he has been doing so many things with on the business side of things, but he's also a fabulous runner. वो 329 का जो हमको कौतुक लगता है उसके लिए कुछ नहीं है. So वो he is a super fast runner also himself. So he's not just an organizer. He is a superman when it comes to running also. So what's your personal best with us? I think it's नहीं, अभी तो कई साल हो गए, but that was 258. I'm right now at a fitness of 320 or something, but by the end of the year it will get better. So 258, check out, guys. So great to have you with the team. साल हो गए. Yeah, but मेरी running, I mean, my running has been a lot, I think a lot longer in terms of number of years, but maybe not as consistent as that of yours. From school only I started running, and it was because of the NCC. So about 99 is when I started running, when running was not as glorified. So Indira Marathon Allahabad में होती थी, वहाँ पे I would run, and then when I came to Mumbai, so of course running barefoot in Mumbai, doing Mumbai Marathon 2006 onwards. That's how it was. So yeah, things were different then. Achha. I mean, you started this page, Vikas, and also the organization Fitpage, and I went to the website also, and I saw Ambu Barefoot. The first, I think, Boston Marathon. He's a Boston Marathon winner. I also had the chance of interviewing him for India. So just tell us about your organization, Fitpage. What does it do, and just your vision about it, please. Sure. So Fitpage is not a page, but the whole thought how it came about was we said we are going to do something in the area of fitness, primarily cardiovascular fitness first as an approach. And why this was the case was because when we think of fitness, आपने देखा होगा कि लोग हम जिम की तरफ दौड़ते हैं या फिर कहीं जाके हम एडमिशन ले लेते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं. Aesthetically we want to look better, bigger biceps, bigger chest, six packs abs, like Dr. Kate, and many other things, right? That happens. But when I studied this in detail, what I realized that actually you don't have to look at acquiring that aesthetics, right? Instead, you need to look at building your cardiovascular, the circulatory system that is stronger, which works as a central axis for you to get fitter. Because if you have your cardiovascular system that's fitter, your musculoskeletal system, your entire body will start to respond a lot better and will get you to move from point A to point B a lot better. And that's the whole purpose of doing an exercise, right? So keeping that in mind, we thought let's start an education platform. And because when you think of education, you think of a book. A book is made of several pages. And उसमें होता क्या है, हम एक पेज एक टाइम पे पढ़ते हैं. So we thought let's name it something that is a book of fitness, but you read it one page at a time. And that's why the concept of Fitpage came about, that you are reading and learning about fitness one page at a time. Like I said, cardiovascular fitness first is an approach. What I saw कि यहाँ पे actually in India, where about 150 million people have one or other lifestyle-led disease, starting from pre-diabetic, diabetes,
to arthritis, to some extent that's lifestyle, to the cardiovascular issues, to blood pressure and everything else, is primarily because of less movement and more eating. We thought, can we help people to figure out how much they need to move, how they need to move, etc. And that's why this was Pisal approach. You talked about Ambi Barfoot. So Ambi is our advisor, and he's 1968 winner of Boston Marathon. An amazing human being. I met him abhi March mein during Boston Marathon, and I used to read his content on Runner's World, and so much of what he was doing, and that's why I thought to request him if he could come on board and mentor as we were building this community, and that's how he came on board. So in Fitpage and through Fitpage, we are building a technology that will help solve the problem of cardiovascular fitness at scale by bringing education of running, by bringing the education about fitness, the training of fitness, and nutrition of fitness, all as an integrated approach. So that's what we do. Very good. आप लोग भी जो श्रोताएं सुन रहे हैं, आप लोग भी इनके पेज में जाइए. There's a Facebook page, there's also a web page for it. लेकिन I mean, a lot of great articles. Vikas himself is a great writer. I loved reading about the difference between running on hard surface and soft surface. I think it was very wonderfully explained. Next time somebody किसी ने पूछा कौन सा रनिंग, बिकॉज बहुत टाइम पूछते लोग कि सॉफ्ट में भागूं या हार्ड सरफेस में भागूं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आर्टिकल. आप लोग जरूर पढ़िए एंड यू विल गेट टू नो कि द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द रनिंग इन बोथ द सर्फेसेस. ओके, तो ऐसे नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन द एक्सप्लेनेशन क्या है वो आप जान लीजिए, देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू आंसर. So Dr. Pallavi, thank you very much. You've been very patient, listening to all of us. But to be, you are the race director for Satara Hill half marathon. And COVID nantar hai first half marathon which is fully packed now. What is, because Satara half marathon, I know that there is a lot of activities, exhibition, खूप सारे आहेत तुमच्याकडे आणि ऍक्टिव्हिटीज वगैरे. तर या वर्षात काय सरप्राइजेस वगैरे आहे काय? Thanks Rajesh, and it was nice to hear to Vikas. Kate sir, as usual, he is always a big mentor and a big support for all of us here. Actually, this year we are starting with our Sunday long runs. Every year we do it, the 16 weeks program. So tomorrow we are starting. कल से हमारा Sunday long runs चालू हो रहे हैं. And then there we have hundreds of runners from Satara itself who run our Sunday. It's on the main event only, like the main event on the main road, just the marathon route. We start our Sunday long run with the hundreds of runners, and the volunteering has been done with our own family members who are the part of Satara Hill half marathon. So all our entire team with all the family members, we gather together on every Sunday and help the runners, we guide the runners. Especially Kate sir, he himself runs and keeps on motivating on the track to all the runners, and even all the runners from our team, they guide the runners to finish up their events. And we have a 16 weeks program which has been displayed, and all the Satara runners are very happy because it's after 2 years that we have joined it again. So it's an uphill run. Tomorrow morning it's a 8 kilometers का run. और अपहिल होगा, और जाते वक्त तो पूरा अपहिल है. While coming back it is a downhill run. So we guide all the runners. We have a run and walk strategy, walk and run, which Vikas will be helping us also. And I like the point which Vikas said, with the help of Vikas, we'll be having a better version. The runners will be having a better version of themselves with the help of technology and science. So thanks Vikas for all the help rendered to us. And tomorrow, while we are conducting the run, we'll be also guiding the runners about nutrition and strength training. As I always say, that runners are made in the gym and not on the road. So it is all the strength training, and also it is 80% of what is nutrition and 20% is what the training is. Because everybody opts for a leaner body, a thinner body, and fat loss and everything. So tomorrow, since
from tomorrow itself, we'll be guiding all the runners regarding nutrition also, and also about the training program like walk and run strategy. And that's it. So we are very much positive about tomorrow's run and very happy that it's again happening again in 2022. ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ अरेंज किया है क्या कल के लिए? Okay, I'll take that one. मिसल पाव, उसल पाव काय आहे? हा नाही तर आणि ह्याचं उत्तर मी खास करून मराठीत देणार आहे, कारण मगाशी विजय सुद्धा जॉईन झालाय आपला. खूप चांगला रनर आहे आणि स्वतः नॅशनल लेवलचा इज अ पिस्टल शूटर, एअर रायफल. तर विजय पवारने प्रश्न विचारला की फिटनेस म्हणजे काय हे मराठीत सांगा. तर हे आपण डिटेलमध्ये घेणारच आहोत सेशन्स उद्या सकाळी. अच्छा, गुड न्यूज इज दॅट वी हॅव लेस देन 10 hours लेफ्ट फॉर द लॉंग रन. मतलब इतक्या दिवसांपासून वाट बघतो लॉंग रन बिकॉज संडे लॉंग रन ना आमच्या इथे इट्स लाईक अ फेस्टिवल. आमच्याकडे मॅरेथॉन असते, इट्स लाईक अ मिनी मॅरेथॉन. सो आमच्याकडे ट्रेनिंग रनला संडेला जवळजवळ 700-800 लोक असतात. सो इट्स अ ह्यूज इव्हेंट. आणि व्हॉट वी हॅव डन इज इन द पास्ट आम्ही काय करायचो की संपल्यानंतर ना सगळ्या रनर्सला नाश्ता द्यायचो आम्ही. सो दॅट वॉज बिफोर फिटनेस जिंदाबाद, राईट. सो काय आहे की लोक 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटरचं लॉंग रन करून यायचे आणि रूटला सुद्धा आम्ही त्यांना एनर्जी ड्रिंक देतो, पाणी देतो, फ्रुट्स देतो वगैरे. आणि परत आल्यानंतर मस्तपैकी शेवटला ना आणखी परत खचून तुम्ही जसं म्हटलं तसं उसळ पाव, मिसळ पाव, खिमा पाव अशा नाश्ता द्यायचो. सो सुरुवातीच्या काळामध्ये एक प्रकारचं अट्रॅक्शन होतं त्याचं. नो इट वॉज फन. एकत्र यायचो, आमचे सेशन्स व्हायचे, एक्सपर्ट्स यायचे आणि सांगायचे आणि नाश्ता. बट वी रिअलाइज की बॉस आपण 10 किलोमीटर पळाल्यानंतर हार्डली 400-500 कॅलरीज बर्न करतोय लोकांच्या, आणि परत आल्यानंतर ते लोक 400-500 पेक्षा जास्त कॅलरीज तर नाश्त्यात खात आहेत. आणि परत घरी आणि सो दॅट इज सो टेक्निकली अँड प्रॅक्टिकली न्यूट्रिशनच्या दृष्टीने जर बघितलं किंवा आपण ज्यासाठी रन करतोय त्याचा विचार केला तर एवढं खायला नाही पाहिजे आपण. वी हॅव टू आणि खाल्लं तर इट हॅज टू बी अ न्यूट्रिशियस डाएट. सो खिमा पाव आणि ब्रेड आणि पास्ता, आणि पल्लवी ऍक्च्युली यूज टू कस्टमाइज ऑल दॅट मेन्यू बिकॉज शी इज ऑल्सो अ डायटिशियन ना, अँड शी इज. सो हे सगळं असं नाही करायला पाहिजे असं आमच्या लक्षात आलंय. सो रनर्सना मला सातारकरांना सांगायचंय की आपल्याला फिट व्हायचंय. फिटनेस जिंदाबाद इज द थीम. सो आपण उद्या जे काही आम्ही करणार आहोत तुम्हाला उद्या बघायला मिळेल. पण ते नाश्ता अँड बुफे मेन्यू, बुफे लंच अँड बुफे ब्रेकफास्ट इज नाव ऑफ द कार्ड्स. त्यामुळे तो नाश्ता नसणार आहे. आपण थोडासा न्यूट्रिशियस असेल ते करायचा प्रयत्न करू. आणि आपल्याला ना फास्टिंग वेगवेगळ्या गोष्टी ट्राय केल्या पाहिजे. फास्टिंग रन काय असतो, यू हैव टू ट्राय, यू हैव टू चैलेंज योर बॉडी ना. कभी कभी तो कुछ खाए पीना भागो, कुछ नहीं यार. वी हैव इनफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, in our liver and in our muscles that we can get up in the morning, run a 10K and come back. यार पाणी पिलं तरी खूप आहे आणि तेही प्यायची गरज नाही. सो हे लोकांचे कन्सेप्ट आता सातारकर्स हॅव नाउ इव्हॉल्व्ड ओव्हर द लास्ट 7, 8, 9, 10 years to reach a stage where they are giving other runners a run for their money when they go outside. पहिले आम्ही लोकल रनर्स साठी रिझर्व्ड बक्षीस कॅटेगरी सुद्धा ठेवलेल्या होत्या. सो दिस ऑल्सो this year what we are doing is 10 वर्षाच्या एज कॅटेगरीज we are replacing it with 5 year age categories, but that will be an open. So Satarakars साठी reservation for the prizes is not anymore necessary because our runners are actually going out and winning prizes. So now Satarakars will win the general category prizes this year, and it will be 5 year ka category. So it will be even better, even more chances for everyone to win, for the faster runners to win. And we also have to now take up nutrition and the other things seriously. Nashta, vishta, yapeksha jast getting fit, stronger is more important. So पहिले तर आपण द्यायचो नाश्ता, टू गिव्ह द ब्रेकफास्ट, पण इट वॉज न्यूट्रिशियस. वी हॅड प्लॅन्ड अ न्यूट्रिशियस थिंग, पण विथ द कॅलरी इंटेक ते वाढत जायचं. रनर्स थोडं कमी असल्यामुळे दे यूज टू ओव्हर इट. हा, आणि पोट कमी नव्हतं, त्या लोकांचं पोटच कमी होत नाही. ते रनिंग अँड दे नॉट लूजिंग वेट. विकास वॉन्ट्स टू से समथिंग. विकास, yes. Yeah, I think Dr. Kate, it's very valid point about food, right? होता क्या है कि मैंने जो देखा है थ्रू पॉडकास्ट और उसके अलावा when runners reach out, वो कहते हैं कि हम इतना दौड़ते हैं लेकिन हमारा पेट वहीं का वहीं है और वेट भी वहीं का वहीं है, right? And this is one of the reasons कि more than we work out, we are going to eat. We think we can eat everything, and just because we run or just because we work out. It's very important to figure out these are two different things. ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो तो it's a magic pill. Now you can eat anything that you want. You need to be in a caloric deficit if you want to lose weight and fat, and also physiologically, like what you said, Dr. Kate, ki
कोई भी वर्कआउट अगर रनिंग का है या वॉकिंग का है 90 मिनट्स है, उससे कम ड्यूरेशन का जो है, तो आपके पास इनफ ग्लाइकोजन स्टोर ऑलरेडी है जो आप यूज कर सकते हो, एंड इनफैक्ट फास्टेड में भी बेटर फॉर यू टू लूज फैट. एंड इफ यू लुक एट इवन फॉर अ फुल मैराथन, on an average runners train 6 hours a week, barring that Sunday run. हर रन का ड्यूरेशन 1 घंटे या उससे कम होता है, so people don't need to literally eat. It's a different thing as a community for festival or meeting up etc. They can eat together etc. But they should be careful कि जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसको they don't trade off by having a very very sumptuous meal right after. ऐसा नहीं कि ऐसा छूट मिल गया कि आप कुछ भी खा लो और कितना भी खा लो एंड इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. लोग रनर्स वही सोचते हैं बिकॉज देखने में आया बिकॉज मैराथन रनिंग हैज बिकम ग्रोइंग इन इंडिया. ऑल्दो द टर्म मैराथन इज समटाइम्स कि ना लोग 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैराथन भी बोल देते हैं, 10 किलोमीटर मैराथन भी बोल देते हैं, लेकिन रनिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर. एंड इतने सारे लोग, इतने सारे नए नए कोचेस हैं और इतने सारे चैनल्स हैं ऑन रनिंग विच इज लोग शुरुआत करते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ एंड मेनी पीपल स्टार्ट रनिंग एट देयर स्लाइटली 30s and 30s plus age and they start running क्योंकि उनको वेट घटाना है. लेकिन जैसे कि ना, जैसे मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि आपने लॉन्ग रन कर दिया उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हो. वैसे और एक चीज है कि सिर्फ रनिंग करने से ही सब कुछ होता है, वो नहीं होता. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट. जैसे लाइक डॉक्टर पल्लवी ने बहुत सही तरीके से कहा कि रनर्स आर मेड इन द जिम, राइट. और लेकिन ये अभी किसी रनर्स को आप स्पेशली एमेचर रनिंग में जो जिनको पता नहीं है क्या है रनिंग, उनको बोलो कि आपको देखो सिर्फ 3 दिन रनिंग करना है और बाकी 3 दिन आपको फिटनेस जिम में करना है, तो कभी नहीं करेगा. इसके बारे में डॉक्टर संदीप, आई नो यू कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट इज योर ओपिनियन एंड व्हाई डू पीपल थिंक लाइक दिस? I'll take this again partly in English and partly in Marathi for the benefit of the Marathi audience. ऐकायला आवडतं. ऍक्च्युली उद्या सकाळी ते सगळं आपण परत बोलणारच आहोत, बट I'll try to keep it a combination of Marathi, English and Hindi as far as possible. So like I said in the previous half, what I said was की मी जेव्हा रनिंग कमी झालं, म्हणजे रनिंग न करता मला घरात व्यायाम करायला लागला, so I did that strength training घर पे. And at that time, at that point of time, the idea was to get some muscles on my body and to look good and all, 6 packs and all. That was the aim. But I also realized की मी ते रनिंग जरी नाही केलं त्या काळामध्ये, इतके दिवस मी रनिंग नाही केलं, मी कमी केलं, घरात असल्यामुळे रनिंग करायला नाही मिळालं, ट्रेडमिलवर थोडंफार करायचो, जास्त लक्ष माझं न्यूट्रिशन, डाएट आणि रनिंगवर नव्हतं आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंगवर होतं. पण जेव्हा हे सगळं लॉकडाऊन संपला ना, at the end of the lockdown when I went out, for example, I went out for my runs, 5K, 10K, तर मला असं जाणवायचं की आय एम फिलिंग मच मोर स्ट्रॉंगर. म्हणजे ऍक्च्युअली रनिंग न करता फक्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यामुळे, एस्पेशली लोअर बॉडीचं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केल्यामुळे आय कुड रन मच बेटर, स्ट्रॉंगर, अँड आय हॅव रिअलाइज की मला इंजुरी आता होत नाहीये. आय यूज टू गेट इंज्युअर्ड व्हेरी इझिली अर्लियर. तर आता या नवीन पर्स्पेक्टिव्ह मुळे काय होतंय की आपण आपल्या बॉडीला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मधून आणि रेग्युलर वॉर्मअप प्रॉपरली करून, स्ट्रेचिंग करून, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ह्या सगळ्या इतक्या महत्वाच्या आहेत. मला एक सांगायला इथं आवडेल की जरी 6 पॅक्स हे काही जरुरी नाहीये, टार्गेट असायला पाहिजे असं मला वाटत नाही. बट विकास करेक्टली सेड ना की दॅट शुड नॉट बी द एम टू स्टार्ट विथ. वेन यू डू थिंग्स करेक्टली, न्यूट्रिशन व्यवस्थित असेल, इफ यू आर वर्किंग आउट रेग्युलरली, इफ यू आर स्लीपिंग वेल, इफ यू आर पेइंग अटेन्शन टू द प्रोटीन इंटेक अँड ऑल, आणि सोबत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तर तुम्हाला आपोआपच यू गेट द फिजिक दॅट यू वुड लाईक टू लुक ॲट. आरशात बघताना ते टार्गेट ते ठेवायची गरज नाही. युअर बॉडी विल रिकम्पोज इट सेल्फ. My hero in this aspect, in this regard, is David Goggins. तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांनी ऐकलं असेल, you would have heard of David Goggins, So runner बोलला तर we think of Bikile and Kipchoge. We tend to think of runners as either very very thin, and then the other type of runner that we usually see is a runner who is running a lot and all, but still is not been able to lose his paunch. म्हणजे पोट त्याचं तसंच आहे बऱ्यापैकी, पण हात पाय बारीक होत आहे. So what I call skinny fat. पण डेव्हिड गॉगिन्स जर तुम्ही पाहिला असेल ना, कारण आता साताऱ्यातले बरेच लोक मला म्हणतात सर तुमची खूप छान फिजिक झाली आहे ऑल दॅट, बट तुम्हाला खरं फिजिक म्हणजे रनर असून सुद्धा फिजिक कसं असतं, मी माय टार्गेट और माय एम, इफ यू सो यू व्हेन यू सी मी टुमारो, डोंट से दैट तुम्हारा बहुत अच्छा है, मेरे को चने की पेट में मत चढ़ाओ, बिकॉज द एम इज डेव्हिड गॉगिन्स. लुक एट डेव्हिड गॉगिन्स. तो अल्ट्रा रनर आहे. ही रन्स
insane distances. म्हणजे तो he wins insane distance. स्पार्टॅथॉन मध्ये भाग घेतात 100 miles, 150 miles, 7 days runs, and still he has a very, very good physique. म्हणजे look at his body constitution. So that is kind of the stars. I'm aiming for the stars, but that should be the target. म्हणजे फक्त running for the sake of running नाही. Body recomposition, paying attention to the other aspects is what I'm striving for. And if we all do it, I'll be very, very happy. So that is the message that we all together want to convey to all of us, Aim for that. Thank you very much for answering that question. I think it's very important that we look at all the other aspects also, apart from running. But हमारा जो topic जो है, first topic is fitness. So let me ask this question to the panelists, to everyone. I mean, how does one know कि वो, they are not fit? So it's somewhere people start their journey, right? But how does someone know, that they are not fit? What is that level, which is like fit है या fit नहीं? वो क्या है वो level? I think Vikas should answer this because he's got that fit test and all everything. So he's the expert actually. Sure, I can take that. I think it's a very good question, and it is relative to everybody. मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक बेंचमार्क है कि आप अगर वो टेस्ट पास करते हो तभी आप फिट हो. ये भी मैंने देखा है कि हाँ, कुछ लोग बहुत सारा पुशअप्स कर सकते हैं बट स्प्रिंट नहीं कर पाते. अगर स्प्रिंट कर लेते हैं तो इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इन सिंपल लैंग्वेज, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट? लोग ट्रेनिंग क्यों करते हैं, लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है? सो एक्सरसाइज इज any physical activity that you do it voluntarily with the objective of being fit. Being fit will mean then you can move from one place to other place with ease. Being fit will mean that you can lift basic weight that need you to carry from one point to other point to live well, right? कि अगर हमें ग्रोसरी उठाना है, हमें ऑफिस जाना है, स्टेप से चढ़ना है, उतरना है, अगर हमें कहीं वॉक करके जाना है, अगर आप ये रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस टू स्टार्ट विद. इफ पीपल हैव इश्यूज एट एनी स्टेज ऑफ दीज, देन देयर फिटनेस इज समथिंग that is compromised. Let's start with how person achieves the sense of fitness to start with, right? Sense of being unfit to start with. How one reaches there. So as we evolve, evolutionary hota kya hai? When we are kids, we are moving a lot from one point to other, from one place to other. Pehle just in the house, then later in the park, in the fields, etc. If you are in the village, खेत में जाने के लिए जो काम होता है वो करने के लिए, लेटर स्कूल में फिर पीटी क्लासेस होती हैं, या फिर अदरवाइज जस्ट कीप रनिंग अराउंड. एज वी स्टार्ट टू गेट अ जॉब and as we start to stabilize, which is a sign of prosperity in the country, correct? कि हमारे पास अच्छी जॉब हो गई, अभी थोड़ा पैसा आ गया, अभी और पैसा आ गया, and we start to get objects such as motor vehicles, such as bikes, such as cars, etc. We start to associate ourselves with, if you need to go from point A to point B, you don't need to walk or run there now. You need to get in a vehicle and go from one point to other. And what happens, that is what starts to happen repeatedly from morning to evening. घर में बेटर सोफा आ जाते हैं, आप ऑफिस में जाओगे बेटर चेयर आ जाएगी, एक जगह आप बैठे रहोगे, आपके पास, आप प्रॉस्परस हो तो आपके पास मेड है, सर्वेंट है, हाउसकीपिंग के लोग हैं, who will give you everything that you need, which was not the case earlier. And then what happens is, when your musculature, when your skeletal system does not get that stressor, जब तक आप बॉडी को रेगुलरली स्ट्रेस में नहीं डालोगे, जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज तरीके में आप नहीं डालते हो, तब आपकी बॉडी डिट्रेन होने लगती है. और यही होता है यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. एंड व्हाट आल्सो हैपेंस इज, वी एज ह्यूमंस, बिकॉज हम स्कूल में कभी एथलीट थे, दौड़ते थे, भागते थे, तो हमें लगता है कि 20 साल बाद भी आज हम फिट हैं, until one fine day when through health markers, through our blood tests, or while walking the steps, etc., we figure out कि अरे नहीं, that is not the case anymore, right? So that is how you get unfit. Now, since you are unfit and it's been established, most of the cases, unfortunately, scaringly, then you need to get fitter. And for you to start to get fitter, let me just cover that. That is that you need to first look at getting fit with your cardiovascular system.
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रेसीड्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब इसका ये हुआ कि आपकी मसल्स बाद में बनती हैं, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्कआउट एज यू स्टार्ट टू पुट स्ट्रेस, योर हार्ट मसल्स एंड लंग मसल्स, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स टू इम्प्रूव फर्स्ट। तो दैट इज लाइक योर बिगर बेस। जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव जो उसकी होती है पहले वो खोदते हैं, हम छज्जा नहीं डालते हैं पहले, करेक्ट? सो थिंक ऑफ इट कि योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो स्ट्रेंथ होता है वो छज्जा है, और आपका बेस जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, राइट? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी होती है, और उसके लिए आप कैसे शुरू करेंगे? यू जस्ट कांट गो एंड रन वेरी फास्ट स्प्रिंट और उसके बाद 50-100 मीटर के बाद देन यू स्टॉप. It's like a sustained period of time. An activity that you can carry out for up to 30 minutes is an activity that you will start with. That means you need to reduce your speed. In most of the cases, you just need to walk to start with. To be able to establish that, what we did was we came with an algorithm through which you take a test. It's called a Fit 500 test, which is a 500 second का test. आप app download करो, आप 500 seconds के लिए जितना fast walk कर सकते हो या run कर सकते हो आप करिए. On that basis, it will figure out your cardiovascular fitness. Once I have figured out, basis that your training plan can be revised. होता क्या है कि जैसे आप मान लो आपका स्कोर 100 है, उस 100 के स्कोर पे आपका 100% अगर आपकी फिटनेस वहां पे है, उसको इम्प्रूव करने के लिए you need to reduce the intensity that's below 100 and keep doing it for a longer period of time. And then your 100 will become 120, फिर 150, 180, 200, etc. So क्या होता है, पहले जैसे हम 4 स्टेप चलने में हमारा सांस फूलती थी, 3 बार के बाद आपको लगेगा कि अब now you can walk 6 steps, 8 steps, 10 steps. So that is called progression. So एक बार पहले आपको बेस लाइन पता चल गई, आपने अपनी नींव बना ली, फिर उसके बाद ईंटें साइड में लगाना हम शुरू करते हैं. So that's like the start point. I'll stop there and maybe seek Dr. Kate or Dr. Pallavi if you have anything to add. Medically, you can add, what are the tests required to look at fitness? Pallavi maybe can do that, but I'll add a layman का approach यहाँ पे. Whatever Vikas said ना, in a layman's terms, मी जे विचार केला होता ना फिटनेस बद्दल जेव्हा मी वाचतोय तेव्हा मला असं लक्षात आलं की बेसिकली मला काय करायचंय की आता मला काय करायचं यापेक्षा जास्त ना मी म्हातारपणी काय करू शकेन आतापासून मला तयारी ही करायची आहे की मी आता ठीक आहे टुडे आय एम 47 years old. I am still not that old, I consider myself pretty young, but what happens when I'm 50, when I'm 60, when 70, and when I'm 80? So what I have kept for myself as a goal is that I should be able to bend down and tie my own shoelaces at 80, at 90, at 100. मतलब जरूरी नहीं कि उस वक्त मैं भाग सकूं मैराथन्स में, लेकिन if I keep myself fit starting today, my musculoskeletal system, my cardiovascular system, my emotional and mental health, if I keep it if I get trained to keep it in balance right now अभी से, so when I get older ना उस वक्त I want to really be able to do the basic thing. जैसे Vikas just said कि घर की छोटी छोटी चीजें, मेरे को उठना बैठना, खुद के शूलेस बांधना, नहाने जाना, टॉवेल से खुद का बॉडी साफ करना, इसके लिए किसी का हेल्प की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. That to me is my long term goal as far as fitness is concerned. So medical tests, and I think there's also one question from Nilima Kale. She has asked about, especially for the females. So how female ka fitness and bone, how does it matter, the bone strength, especially in 40s and 50s? So I think Pallavi should answer that aspect. The medical tests like Rajesh was asking, and the female ka bone density and fitness. Because put an emphasis on cardiovascular endurance. What I feel personally, because of my own experience, my husband underwent a bypass and still he's a runner. So Pallavi, your camera is shaking. Your camera is shaking. Just keep it stable. Yeah. So what I feel is cardiovascular strengthening is much more important, and for that the lipid profile test and the hemogram, the calcium test, these are the important. As far as the ladies are concerned, they should get their 6 monthly at least. After 40s, they should do their breast checkups and the USGs and ultrasonography of their uterus done. That's all are the basic things. And the bone strengthening is much more important. So the calcium level should be checked regularly. These are the basic things which all the runners and especially the females should adopt. Okay. Thank you very much for the answer, Dr. Pallavi and Dr. Sandeep, and of course Vikas. My question is next to the panelists is this: ये फिटनेस का जो जोश जो चढ़ता है लोगों को, वो यूजुअली तब चढ़ता है जब उनका मेडिकल टेस्ट हो जाता है.
तो there's a difference कि हाँ भाई हाँ suddenly डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको फिट होना है क्योंकि आपका जो है जो भी है it's higher. My question is this, two parts. One is that fitness for youngsters, important. How is the importance of that? And the fitness for the people who are above 40s, because I think below 40 are still youngsters. 40s and above and below 40s. So can I take this first? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स का सीन अभी ऐसा है कि यंगस्टर्स हो या ओल्ड हो, इवन दो हम लोगों ने जो मैराथन भागना शुरू जब किया तो हमारा यही एम था कि अभी 30s में 40s में हम लोग अपना फिटनेस लूज कर रहे हैं, वी वांटेड टू लूज वेट, वी वांटेड टू गेट फिट एंड ऑल. अभी एक बार उसकी आदत लग गई तो वी आर इनटू इट फॉर द फन ऑफ इट आल्सो, इट बिकम्स अ हैबिट एंड ऑल. बट यंगस्टर्स हो या सीनियर्स हो, हम लोग आज एक बहुत बड़े पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं. तो वन पैंडेमिक इज ओवर hopefully and fingers crossed, but we are still facing another pandemic which is like inactivity ka pandemic, and that inactivity ka pandemic is being fueled by mostly the very gadgets जो हमारे सामने है. अब ये गैजेट्स की वजह से जो यंग जनरेशन जो है ना, they are हम लोग तो इन गैजेट्स का यूज करके, फॉर एग्जांपल ये गैजेट्स अभी यूज करके हम लोग एक दूसरे को फिट रहने के लिए प्रमोट कर रहे हैं. सो वी आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर नाउ टुगेदर एज अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ. सो इट्स नॉट दैट द गैजेट्स देमसेल्व्स और द टेक्नोलॉजी और द सोशल मीडिया दैट इज बैड एज सच, बट उसका अच्छा यूज करना बहुत जरूरी है. और ये कमिंग टू द यंगर जनरेशन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट एन एग्जांपल फॉर द यंगर जनरेशन, व्हिच थैंकफुली आई एम प्राउड टू से कि हम लोग कर रहे हैं. सो हम लोग जो कर रहे हैं, बिकॉज do as I do, people do as you do, they don't do as you say. अगर आप सिर्फ बात करोगे और खुद नहीं करोगे तो यंगर जनरेशन नहीं करेगा. तो हम लोग जब भाग रहे हैं, हम लोग जब रास्ते पे हाफ चड्डी पहन के जो शुरू में ऐसे ही कहते थे सातारा में हमको, ये क्या शॉर्ट्स पहन के रास्ते पे पागल जैसे भाग रहे. जब हम लोग ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो देख रहे हैं कि बॉस अपना बाप भी अगर जाता है, मैं तो पेशेंट का राउंड लेने जाता हूँ तो यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स आई कम बैक फ्रॉम माय रन and I'm in my shorts and I'm in my t-shirt and I go for the round. So I don't mind doing that at all because I'm giving some message to the patients. I'm giving that message to my kids and the next generation. सातारा जे आज आपण सगळे पळतोय, सातारकर जे उद्या 500-600 लोक साताराच्या स्ट्रीट्स वरून पळतात, they are giving a message not only to the older generation and the middle age generation but also to the youngsters. They they are watching यार ये लोग भाग क्यों रहे. So उनको इंस्पायर हो रहा है and they also take up fitness as a lifestyle and it is important to inculcate these habits at a very young age. इसलिए मुझे लगता है कि this marathon running, भले 2 किलोमीटर का मैराथन नहीं होता, बट इवन आई यूज्ड टू से मैं झगड़ा करता था पहले. यहाँ पे कोई हाफ मैराथन को अगर बोलता है ना मैराथन, तो मैं झगड़ा करता था, यार ये इसको हाफ मैराथन इसको मत बोलो. बट नाउ आई से यार तुम 500 मीटर का मैराथन बोलो, लेकिन वो 500 मीटर बच्चे भागते हैं ना, उसको भी इंपॉर्टेंस है. सो लेट द किड्स गेट इनटू एक्टिविटीज, एथलेटिक्स, these things have to be promoted, of which we are doing a good job by organizing and promoting marathons, and Rajesh is doing a great job by promoting and bringing the runners and the running community to the forefront to his all India runners motivation. So that's my perspective as far as age and running and fitness is concerned. Thanks for your answer, Dr. Sandeep. Vikas, any thoughts on it? Fitness, बच्चे लोग and बूढ़े लोग. No, for sure. I think Dr. Kate covered. I think बच्चों के लिए या फिर youngsters के लिए मेरे हिसाब से fitness is equally or more important. मैं उसका reason क्या है कि as we are growing, we have different type of stresses. We have mostly stresses of unknown. That is, we need to be stable over a period of time. Financially, we need to get a job. We are preparing for competitive exams. At the same time, what also happens is we have lot of pressure from parents. Sorry, Dr. Kate and everybody who is a parent, but it is true that we have very high hopes of our kids, and we think they should be picture perfect. As a result, the body keeps going through so many stressors, right? And we know that the stress of exercise, the stress of workout helps you recover faster from other stressors, right? And so if they're able to focus in doing this, it also is very good for them physiologically, for them to be able to sleep better, for them to be able to focus better. And another thing, like I said, that it almost works as a baseline of your
start of fitness, and if it's bred right at the start of as you're growing, it's not going to lose. Like, for example, I started running when I was 14 years old, and I have not stopped ever. That was primarily, and I also see जब मैं कहीं जाता हूँ, it helps me with my identity. I'll be honest, right? मैं कहीं भी जाता हूँ, there is someone I can find out who has another pair of running shoes, who wants to go out and run, even in school, even in college, and that community is a lot more participative, a lot more appealing and meaningful than I having to focus on something where I'm just sitting idle. For example, like Dr. Carter, you said that social media and every other distraction that's available, it helps you stay away from it too, right? And that's why I feel it's important for the elderly people. I think it's important from 2 points. One, I said, like the science of detraining. जब आप detrain कर रहे हो तो उसका impact आपकी bone density पे पड़ता है, आपके musculature पे पड़ता है. As a result, people start to slouch, लोग झुक जाते हैं, activities regularly नहीं कर पाते हैं, and then that also starts to show as health marker issues in various lab tests, like Dr. Pallavi talked about. That is one. And then these acute stressors, the chronic stressors, start to cause a number of irrecoverable imbalances, right? कि आपको जो कुछ health conditions ऐसी हो जाती हैं, फिर आप you have gone so far out that you can't recover. So it's much better for you to pick up an exercise that you can sustain over a period of time. I personally promote endurance activities for obvious reasons, and here I want to demystify one fad, and possibly we'll cover that too, is that the nuances around not running. कोई बोलेगा कि किसी के shin में pain है, Achilles में pain है, या किसी का घुटना टूट जाएगा. मैं तो भाग रहा हूँ 29 years से, possibly 24 years से, and अभी तक कुछ नहीं हुआ है. And I'm sure that is the case with almost everybody. In fact, it helps you become stronger with your bones and joints if you are running. So I think people should not focus on these myths, but rather pick up at any age, to be honest. और एक ये भी है कि जैसे अभी बच्चे, when we are talking about the youngsters, अगर उनको डिसिप्लिन आ जाता है फिटनेस से, जैसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ, तो so they naturally try to keep themselves fit, and in that perspective they keep themselves away from the junk food which they are consuming. Like बहुत सारे अट्रैक्शंस रहते हैं कॉलेज के बाहर भी, पिज्जा है, ये है, वो है, क्योंकि I've gone through that. My daughter was into a college life, and she has reduced a lot after coming into the fitness thing. So she used to have a lot of junks outside, but once she entered into the fitness thing, she has reduced almost 20 kgs, and now she's totally fit. And that's the reason the youngsters should keep fit. They keep themselves away from the junk food and also the addictions like smoking and drinking. So if they are well aware of everything, like about the fitness, they keep themselves away. And about the elderly people to talk about, I being a general practitioner, I come across many patients, and also in India itself, India is now leading towards diabetic capital of the world. And diabetes is increasing. I mean, like diabetes and the obesity, both the things are increasing in India. So if we promote fitness, so that's going to be helpful for all the elderly people. Okay, very good. That wonderful answer by all of the panelists, and you're right. It's very important. If you start at very young age and you become more knowledgeable at very young age, I think that will help really well. So my question I think we have been talking about fitness a lot. So let us start this question like, कैसे शुरुआत करें एक जर्नी, फिटनेस की जर्नी कैसे शुरुआत कर सकते हैं? What are your thoughts on it? And especially please concentrate on people who do not have access to costly gyms and fancy equipment. उनके बारे में जरा सोचिए, because जिनको there are places where there are no gyms, right? Then what do you do? So just if you want to advise somebody, especially people on to start a fitness journey, it does not matter where they are. What are your thoughts on it, please? I would really love to hear it, which will be helpful for everyone. How to start a fitness journey, and also for people who do not have access to costly gyms. What are the things they should do to make sure that they are fit? Can I take this, Rajesh? So
मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं ये रनिंग वगैरह तो अभी शुरू हुआ पिछले 10-12 साल में। उसके उसके 10-12 साल पहले कुछ भी नहीं किया मैंने। ऑलमोस्ट प्रैक्टिस जब सेट कर रहा था तब आई हैड गिवन अप काइंड ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑलमोस्ट। जिम जाना वगैरह तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट टाइम में मतलब बीच बीच में क्या होता था कि एक ना जो बचपन में जो एक आदत लग गई थी, एक एक्सरसाइज करने की बचपन में आदत थी, वो थी बेसिकली फ्री स्टाइल एक्सरसाइज पे। उस वक्त उसके लिए फैंसी वर्ड क्या था मुझे पता नहीं था, है ना। अभी उसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं ऐसा मालूम पड़ा यूट्यूब चैनल्स देख के और ये सब देखने के बाद में, स्टडी करने के बाद। लेकिन फ्री बॉडी एक्सरसाइज मतलब जिसको हम बोलते थे जोर लगाना, है ना, बेसिकली जिसको अभी हिंदू पुशअप करते हैं, ये भी मालूम पड़ा मेरे को बाद में। तो सूर्य नमस्कार जो हमारे संस्कृति में पहले से दिया हुआ है, और जो हम लोग पहले जिम में, भले बाद में जाना भी शुरू हुए थे कॉलेज में जाने के बाद, पर पहले सबसे जिम में जाने के बाद भी हम लोग ना जोर मारा, मतलब जिसको ऐसा ये वाला हिंदू पुशअप बोलते हैं, नॉट द द पुशअप, बट द प्रॉपर जो जोर होता है, जो अखाड़े में भी मारते हैं। तो वो घर पे करने जैसा बहुत अच्छा एक्सरसाइज ऐसा मुझे लगता है कि जो अभी भी मेरा मेन स्टे है। सो मैं जिम जाऊं या ना जाऊं, अगर जिम जाता भी हूं तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द जोर which has given me a sustained, I think, a basic muscle mass। जो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ और मसल का एक बेसिक मास होता है ना, which we earn especially in the younger age group। it gets a bit tough as you age because आपका हार्मोन्स थोड़ा डाउन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं एंड ऑल। बट इफ यू राइट फ्रॉम द अर्ली एज विदाउट एनी एक्सेस टू एनी इक्विपमेंट, अगर आप घर पे सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक जो 7 बेसिक मूवमेंट है ना अपने बॉडी के, जो कहते हैं कि द ह्यूमन बॉडी हैज 7 बेसिक मूवमेंट, जिसमें पुश मतलब पुश करने की एक्शन है, पुल करने की एक्शन है। सो पुश पुल, देन द लंज विच वी डू द लंजेस, उसके बाद स्क्वाट्स, ना सिंपल बैठक मारना। ये बैठक मारना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है, रोटेशन, सो जस्ट रोटेटिंग द बॉडी लाइक दिस। उसके बाद हिंजिंग मूवमेंट एक होता है, बेंडिंग फॉरवर्ड लाइक दिस। एंड फाइनली द गेट। सो पुश पुल लंज स्क्वाट रोटेट हिंज एंड गेट। गेट मीन्स व्हेन यू वॉक, है ना, वॉक या रन। तो ये बेसिक एक्टिविटीज आप कहीं भी कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, एनी जिम। आप घर जो कर सकते हो उसमें जोर, जैसे मैंने बताया, वो मारेंगे तो आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। आप घर में वॉक करो, आपके घर में अगर आपको भागने की जगह नहीं है तो आप वॉक करके भी दिन भर में अगर एक सवा घंटा 1.5 घंटा आप चलो रीजनेबल पेस से, तो 10,000 स्टेप्स आप क्रॉस कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ रीजनेबल टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस टू अचीव, जो मैंने खुद किया 6 महीना। अगर मैं भागू नहीं भागू, लेकिन 10,000 स्टेप्स वॉक करना कम से कम, जो अपना मोबाइल में काउंटर होता है, घड़ी में आजकल काउंटर होता है, या तो टाइम लगा के आप 1.25 घंटा आप रीजनेबल पेस से चलो। सो 10,000 स्टेप्स चल के आप अचीव कर सकते हो ये एक्सरसाइज। और स्कीपिंग, सिंपल सिंपल थिंग्स, यू डोंट नीड फैंसी इक्विपमेंट। आप स्कीपिंग कर सकते हो फॉर योर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। आप ज्यादा क्यों, मैं बताऊं, आप, मैं जस्ट यहाँ पे खड़ा होकर अगर अभी मैं ये बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, उससे अच्छा अगर मैं खड़े रह के अगर बात करूं, या मैं ये अभी स्क्वाट पोजीशन में, नाउ आई एम नॉट सिटिंग ऑन चेयर, अभी आई एम जस्ट इन अ स्क्वाट पोजीशन, राइट। तो 1 घंटा ऐसे बैठ के हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा जो मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं ना, वो लोग अगर ऐसा करें कि वो खड़े भी रहे, जहां हो सके वहां खड़े रहो। जहां हो सके मोबाइल देख रहे हो तो आप चल के काम करो, मोबाइल का काम जो है चल के करो। और जहां हो सके उतना टाइम में आप स्क्वाट्स मारो, है ना। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं बॉस? तो दिस इज हाउ फिटनेस कैन बी एक्चुअली डन विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी फैंसी गियर। इफ यू फोकस, इफ यू गेट यूज टू इट, आप एक लाईफस्टाईल उसको बनाव, आपल्या आयुष्याची एक पद्धत ठेवायची ही, हलत राहायचं, चालत राहायचं। इवन असं बोलताना सुद्धा मी असं असं करतोय, आय एम स्टिल बर्निंग कॅलरीज यार, आय एम गेटिंग फिटर बाय द मोमेंट। तो असं बसून राहायला नाही पाहिजे। दॅट इज माय टेक ऑन दिस, सिंपल थिंग्स विल go a long way in achieving fitness. Vikas, thank you very much, Dr. Sandeep. Vikas, any further thoughts on this? Yeah, I would want to focus on cardiovascular fitness a lot more, since Dr. Kate covered on many other aspects. So मेरे हिसाब से कोई भी आदमी हो, किसी को भी अगर अपने फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए उनको 1-2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डॉक्टर पल्लवी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगी, बट सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप एडिशनल एक्सरसाइज जो आप करने जा रहे हो, जो अपनी बॉडी पे स्ट्रेस डालने जा रहे हो, उसके लिए आप तैयार हो या नहीं। व्हाट इट मीन्स कि क्या आप हेल्दी इनफ हो कि वो आप स्ट्रेस ले सकते हो या नहीं। तो उसके लिए बेसिक जो भी टेस्ट होते हैं वो कराए जा सकते हैं। अगर वो एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ आप फिट इनफ हो कि आप एक्सरसाइज ले सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि कभी जब हम
कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड डिफरेंट इलनेसेस होती हैं जो उभर के आ सकती हैं, जो अदरवाइज नहीं आती हैं, राइट। तो वो जान लेना बहुत जरूरी है, जबकि इतना वो केसेस नहीं होंगे मेरे हिसाब से, बट डॉक्टर पल्लवी उसके बारे में बता पाएंगे। अगर वो एस्टैब्लिश हो जाता है तब आप सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करिए। सेकेंड स्टेप ये होता है कि क्या आप इनफ टाइम कमिट कर सकते हो कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए या नहीं। पहले तो ये जान ले कि कोई भी एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज। कुछ भी आप करना, जैसे अभी डॉक्टर काटे ने कहा, अगर आप बैठ के अपने हाथ भी हिला रहे हो इज बेटर देन जस्ट सिटिंग सेडेंटरी। सो अगर आपको लगता है 30 से 40 मिनट्स पर डे आप अपना कमिट कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट पॉइंट। और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि जो भी आप करते हैं वो आप रेगुलरली कर सकें। मतलब अगर आप 30 मिनट्स अ डे कर रहे हो, क्या आप एटलीस्ट 6 दिन कर सकते हो। अगर आप 6 दिन कर सकते हो एक दिन का ब्रेक लेके, वैसे जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट है अभी वो फ्लॉड है। ऐसा नहीं है कि आपको हर हफ्ते एक दिन का रेस्ट ही लेना है, बट आप स्टार्ट कर रहे हो तब बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करिए। ट्राई टू बी ऑन योर फीट 30 to 40 मिनट्स टू स्टार्ट विद। हाउ यू बी ऑन योर फीट, जैसा कि डॉक्टर काटे ने बताया, जब आप सो रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी का वेट, मतलब 70 किलो आपका वेट है तो 70 किलो का वेट आप सो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो तो करीब 1.1 टाइम्स आपके वेट पे आप बैठे हो, ऐसा इस तरह का प्रेशर आता है। आप खड़े हो और धीरे धीरे वॉक कर रहे हो तो 1.5 टाइम्स आपकी बॉडी वेट का आप जो है उस हिसाब से आपके हर स्टेप पे आपकी बॉडी का वेट पड़ रहा है। अगर आप रन कर रहे हो तो आपके हर पैर पे 3 टाइम्स जो बॉडी वेट आप अपना लोड कैरी करते हो। मतलब अगर आप 70 किलो के हो तो 210 किलो आप कैरी करोगे, तो जो कि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है अगर आप देखो तो आपने ये देख लिया कि आप 30 मिनट पर डे कर सकते हैं। स्टार्ट करिए वॉक करना। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, एक जगह खड़े रहिए 30 मिनट्स, राइट। वहां से आप स्टार्ट करिए वॉक करना, धीरे धीरे वॉक करिए। आप क्या करेंगे, जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो जो आपके टेंडेंस होते हैं, जो आपकी बोन्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट गेटिंग यूज्ड। कुछ फैंसी बहुत कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे से आपकी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ेगा उस तरह से आप अपने गियर्स खरीद सकते हैं। पहले आप वॉक करना शुरू करिए। जब आपको लगता है कि आप 30 मिनट तक बिना रुके हुए 6 दिन वॉक कर सकते हैं तो आप 1 मिनट का वॉक, आधे मिनट का रन करना शुरू करिए और ऐसे आप 30 मिनट कवर करिए। ऐसे से करके आप इस स्टेज में आना चाहिए कि आप 5 मिनट रन करें और 1 मिनट वॉक करें। अगर ऐसा करके आप 6 बार रिपीट करेंगे 30 मिनट हो जाएगा। जब ये होगा फिर आप धीरे धीरे ऐसा करिए कि 15 मिनट रन करिए, 1 मिनट वॉक करिए, ये रिपीट करिए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम करीब 4 हफ्ते में आप, कोई भी इंसान 4 हफ्ते में वो इंसान 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली किसी न किसी स्पीड पे जॉग या वॉक जरूर कर सकता है। जब वो हो जाए उसके बाद अपने 30 मिनट के बाद आप 50 मीटर के स्प्रिंट ऐड करना शुरू करो। मतलब आपने 30 मिनट की जॉग कर लिया, उसके बाद आप 50 मीटर का स्प्रिंट करिए, रुकिए 2 मिनट तक, फिर से उसी को 4 बार रिपीट करिए। उसको बोलते हैं स्ट्राइड। उससे क्या होता है, आपका बेसिक एडाप्टेशन आपकी बॉडी में आना शुरू होता है कि आपका फैट लॉस ज्यादा होगा। आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, उससे मसल्स आपकी स्ट्रांग हो रही है लेकिन इंजरी नहीं होगी। अगर आप ये करोगे तो ये पूरा लेके आपको करीब 1 से 1.5 महीने चला जाएगा। एंड देन फ्रॉम देयर वी कैन टॉक अबाउट कि आगे क्या करना है। ये सब कुछ हमने अपने ऐप में भी बिल्ड किया है, बट आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द ऐप, बट पीपल कैन गो ऑन फिटपेज एंड फिगर आउट ऑल ऑफ दिस देमसेल्व्स, एंड इट्स ऑल on our content platform. People can see it, but this is a basic start point, I would think. Thank you very much, Vikas, for your answer. My question is all about, because Vikas, when he started this conversation, he said, ये जो है ना ये डॉक्टर पल्लवी कहेगी. So the सवाल is for डॉक्टर पल्लवी, खाने में क्या करना चाहिए लोगों को? अभी मैराथन के हिसाब से बोलना चाहिए तो कल भी द प्री वर्कआउट मील, ड्यूरिंग द वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट तो पोस्ट वर्कआउट मील हम लोग क्या खाते हैं उस पे रहता है, क्योंकि जब अभी हमने बताया कि पहले हम लोग ब्रेकफास्ट रखते थे और भर भर के खाना खाते थे। अभी काटे सर ने भी बताया कि हमारे शरीर में भर भर के ग्लाइकोजन का स्टोर है, लेकिन फिर भी अभी जब भी एक हमारे संडे लॉन्ग रन कल से चालू हो रहे हैं 16 लॉन्ग रन, तो उस हिसाब से अगर बोलना चाहिए तो मैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्री वर्कआउट
जैसे कि रन शुरू होने से पहले, अभी फास्टिंग स्टेट में तो हम लोग कर सकते हैं, जो कि फैट प्रोटीन डाइट पे अच्छे से कर रहे हैं वो तो फास्टिंग स्टेट में कितना भी भाग सकते हैं। लेकिन जब ये एमेच्योर रनर्स हु हैव रजिस्टर्ड और जो करना चाहते हैं अभी रन, तो मेरे हिसाब से एक केला या तो वन डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कल रात का खाना अगर कार्बो लोडिंग किया है कल सैटरडे नाइट को, तो सुबह उठ के अगर एक बनाना या एक खजूर खा के भाग सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खजूर या डेट इज इट प्रोवाइड्स यू एनर्जी इन द लॉन्ग रन, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी जो शक्कर कम हो जाती है सुबह उठ के, उसको भरने के लिए इधर बनाना और डेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ड्यूरिंग द रन, जब भी रन कर रहे हैं तभी हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपहिल है विच इज वेरी वन ऑफ द टफेस्ट रूट्स इन द मैराथन। तो ड्यूरिंग वो सॉल्ट इनटेक, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पोस्ट वर्कआउट जब भी हम लोग स्ट्रेस डालते हैं, जैसे अभी विकास सर ने बताया कि व्हाट इज एक्सरसाइज, इट इज अ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। तो ड्यूरिंग द स्ट्रेस जो भी वेयर एंड टेयर हो जाता है बॉडी का, और जब भी हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं रन के बाद, वो जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी जो शुगर कम हो जाती है, वो नेचुरली शुगर भरने के लिए वन फ्रूट इज वेरी गुड ऑप्शन, एंड दैट फ्रूट आई वुड रिकमेंड इट शुड बी अ बनाना, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू विथ पोटेशियम ऑल्सो, और नेचुरल शुगर भी मिलती है हमें बनाना से। और जो वेयर एंड टेयर मसल की वेयर एंड टेयर जो हम लोग की हो जाती है रन के दौरान, तो उसको मसल की वेयर एंड टेयर भरने के लिए a very good protein, you should ingest a very good protein within 40 minutes post your exercise। और फिर जो सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, कैल्शियम है, विटामिन के है, ये सारे सप्लीमेंट्स वो भी जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इज द वे प्रोटीन विच आई रिकमेंड द वे प्रोटीन एंड अ बनाना पोस्ट वर्कआउट। स्पेशली आई लाईक द वर्ड जैसे कोई टॅबू आहे वे प्रोटीन हा शब्द असा आहे ना की लोक म्हणतात अरे काय वे प्रोटीन म्हणजे पावडर खायची का? सी नॅचरल खायला पाहिजे, ऑल एक्सेप्टेड, नेचुरल फूड इज बेटर देन प्रोसेस फूड, ये बोलना ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो वेयर एंड टेयर हम लोग करते हैं ना बाय रनिंग प्रोड्यूस डिस्टेंसेस है ना 15 20 25 30 40 किलोमीटर भाग के आते हैं, उसके बाद क्या हम लोग 10 अंडे खाते हैं? वाइट आई मीन क्या हम लोग स्पेशली वेजिटेरियन जो होते हैं ना उनके लिए स्पेशली सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर लिमिटेड, और वो इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते लेमन के लिए जो होता है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, पर अपने लिए कम से कम 1.5 ग्राम्स एंड आइडियली प्रेफरेबली 2 ग्राम्स पर केजी होना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसलिए यू हैव टू गो फॉर सप्लीमेंटेशन, जिसको होता है पॉसिबल उसने कम से कम वे प्रोटीन लेना ही चाहिए, एटलीस्ट 1 स्कूप पर डे लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। सो टेकिंग सप्लीमेंट्स शुड नॉट बी अ टैबू, नेचुरल रहो जितना हो सके, बट वेयर नेसेसरी वी शुड टेक। एंड कार्बो के बारे में सिर्फ रनर्स बात करते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन नाउ, एंड दिस इज ऑल कमिंग अप इन द नेक्स्ट 16 वीक्स, डिटेल्स में हमको नहीं जाना है, बट we have to as runners start thinking of the other things which we are neglecting is what I want to say. Yes, I was just about to say that because we are running out of time. We never know how 1 hour 8 minutes passed away. So I think it's been a great discussion. I just want to tell the audience, yes, we're going to continue this talks on fitness, and in the next coming weeks, I think in 2 weeks from now, wherein we are going to talk about the workouts. We're going to talk about something which I think I'm wanting the panelists to also to think about, the fitness of the mind. Okay, because I think in this day and age, we have to talk about it. About the fitness of the mind. What are the things they have to do to remain fit at a later stage of life, and also workouts. How to get the workouts, and all the questions we have received. उन सवालों को आंसर करने के लिए हमारा जो इसका फिटनेस जिंदाबाद पार्ट 2 जो है लोग सवाल लाइक but how to recover. It's not a rest day, but how do you recover? मुझे लगता है यहाँ पे वो एडिक्शन सा हो जाता है, और उन लोग चाहते हैं कि रनिंग
सोते ही नहीं है रनर्स, रात को 12 बजे सोते, हमें बात करना, that is also part of fitness, जो हम लोग जो है हमारे अगले टॉक्स में कवर करेंगे. बट बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. We got more than I think 100 people watching this. A lot of people have liked it. और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है कमेंट्स डाल रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन. एंड आई एम श्योर कि हम लोग ये जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम का डेट है वो हम लोग जल्द से जल्द बताएंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बट आई जस्ट वांट एवरीवन टू से बिफोर वी गो No. Yes, Rajesh, we are not closing. मेरे को और कुछ कहना है before we close. बोलो. So हम लोग का थीम जो फिटनेस जिंदाबाद है, उसी तौर पे जैसे अभी आपने कहा कि all those things will cover in the next few lectures. तो sleep is important, protein is important, the recovery is important, strength training is important, mental fitness which Rajesh talked about is very important. So हम लोग क्या करेंगे, हर संडे का लॉन्ग रन का जो थीम रहेगा वो हमारा ऐसे ही रहेगा. That is the idea. So it will be protein zindabad, sleep zindabad, mental fitness zindabad, strength training, muscle zindabad, yes, running zindabad, Rajesh zindabad, Vikas zindabad, Pallavi zindabad. Yes. अरे क्या बात है छुपा रुस्तम. So everything is zindabad. The theme is that we are here to be together as a community. The running community is zindabad. And now you can say what you wanted to say. Yes, I think we can just end this program by everyone saying fitness zindabad. So let's say it 3 times for the audience. बाकी लोग भी बताइए, शुरू करें to say it on a count of 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fitness zindabad. Fitness zindabad. Fitness zindabad. Fitness zindabad. जिंदाबाद. Thank you very much for being in the program. बाकी लोग स्टूडियो में बने रहिए. Thank you. Thank you. Thank you.